श्रीमते रामानुजाय। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिष आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। मेरा एक कस्टमर, मतलब मेरा भाई जैसा ही था, रेगुलर कस्टमर था। वो भी मेरे पास आया, मतलब मुझे फ़ोन किया और पूछा कि जी मैं एक बिज़नेस के लिए मैं मेरा बिज़नेस के लिए एक कस्टमर को मीट करने के लिए जा रहा हूँ। क्या मेरा मीटिंग सफल होगा? वही उनका क्वेश्चन था। मीन्स he is going to meet a customer for his business. What kind of business he is doing? He is doing a real estate kind of business. Actually, he is doing a real estate kind of business, and he is going to meet a customer on 21/12/2025. So you see the date here, 21/12/2025. He is going to meet a customer, and his question is whether this meeting will be fruitful and will I get the business from them. That is the question, and straightforward question. So फॉर दिस क्वेश्चन हमने एक रूलिंग प्लैनेट का चार्ट बनाया। आप सबको एक चीज थोड़ा क्लियर होना चाहिए। केपी मेथड में बहुत सारे मेथड हैं। एक प्रसन्न हारास्कोप है, बर्थ टाइम बर्थ चार्ट है, और दूसरा रूलिंग प्लैनेट का भी चार्ट बना सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ रूलिंग प्लैनेट चार्ट। व्हाट इज मीन बाय रूलिंग प्लैनेट चार्ट सर? द टाइम or the day or the moment when he called me, I just created one chart actually. See, if you see the chart over here, he called me on 21/12/2025, and he has the time when he called me is 12:29 p.m. He called me on 21/12/2025 and time is 12:29 p.m. For this date and for this time, I just created one chart. That's it. Very simple. And we call this as a रूलिंग प्लैनेट चार्ट। वी कॉल दिस एज अ रूलिंग। इधर देखिए रूलिंग प्लैनेट है ना, इधर देखिए रूलिंग प्लैनेट चार्ट। Okay, according to this chart, what we have to see is first we need to understand what is his question actually. If you see this chart, we will get the cuspal interlink for 9 planets, and as well as 12 Bhava interlinks, cuspal interlink for the 12 planets. So these two chart we will get. So I will show you in a better, in another screen. If you see here, this is the chart what we got. You see here, first is the 9 planets cuspal interlink chart, and another chart is the 12 Bhava interlink chart. ठीक है. So in order to analyze the question, first we need to check the Lagna Bhava. If you see the Lagna, Venus is coming as the sublord for the Lagna, and Venus is standing on Ketuka star. Then again Venus is coming as the sublord actually. If you see here, Venus is connected with the first house as well as second house. So one thing is very clear here. First house in the sense पहला house, मतलब पहला भावा हम जातक को इंडिकेट करता है, और सेवंथ भावा जिसको हम मीट करते हैं ना उसको इंडिकेट करता है, द ऑपोजिट पर्सन। सेवंथ भावा हम बोलते हैं द ऑपोजिट पर्सन। So right now he said like, sir, I am going to meet a person or I am going to meet a customer. So here one thing is very clear. What is the thing is, the meeting will definitely happen. The meeting will definitely happen because if you see here, Lagna is connected with the Lagna as well as the 7th house, and also if you see here, Venus is activating the 7th, 1 and 7 bhava. If you see here, the activation, effective link, if you see here, it is activating the first house and second house. So which means the meeting will definitely happen. So first step is very clear that he is going to meet the customer today itself. There is no second thought. ठीक है. Now comes the second question, sir, whether that meeting will be favor to me or not. So in order to analyze that, we need to see the 11th house also. First we need to see the 11th house. Whether that meeting will be in a successful manner or not. If you see here, Mercury is coming as the sublord for the 7th house and 11th house, and Mercury is standing in the own star. Mercury का star में ही है, उसके बाद भी Mercury का सब star में ही है. So now Mercury is activating, if you see, 2nd house, 5th house, 8th house और 11th house. So here there is some problem indication over here. ठीक है. What is the problem, sir? First we need to understand what is the planet coming as the sublord for the 11th house. So Mercury
came as the sublord for the 11th house. So what does Mercury means? Mercury resembles documentation, paperwork, registration and all those things. Mercury resembles all these things actually. So if you see here, Mercury is very strongly activating second house and eighth house. So what is meant by second house and eighth house? Why Mercury is activating second house and eighth house? So which means there will be some problem in the documentation part. So what I said is that मैंने क्या बताया कि सर आपका मीटिंग फ्रूटफुल होगा, आपका मीटिंग मतलब आप जरूर कस्टमर को मीट करेंगे. दैट इज द फर्स्ट प्रेडिक्शन आई गेव. व्हाट सेकंड प्रेडिक्शन व्हाट आई गेव इज आपका मीटिंग फ्रूटफुल होगा, लेकिन आपका मीटिंग में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम होगा. मतलब वो लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे, और एल्स ये जो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं ना, कुछ तो अग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा. अगर चलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा. पहला चीज नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो प्रॉब्लम होगा. तो मैंने दो प्रेडिक्शन दिया. पहले क्या दिया मैंने कि सर वो लोग डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं देंगे, और दूसरा चीज अग्रीमेंट के ऊपर आप मतलब साइन डालने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिया. और उसके बाद हमको क्या देखना कि व्हाट इज द करंट दशा एंड व्हाट इज द करंट बुद्धि. अभी आप देखेंगे, इधर देखेंगे कि अभी वीनस का दिशा चल रहा है. इधर देखिए अभी वीनस का दिशा चल रहा है और राहु का बुद्धि चल रहा है. वीनस का दिशा और राहु का बुद्धि चल रहा है, और मेर्कुरी का अंतरम चल रहा है, अंतर चल रहा है एक्चुअली. नाउ वी विल गो टू द कस्पल इंटरलिंक चार्ट. इफ यू सी है व्हाट आई सेड इज द वीनस का दिशा चल रहा है. देखिए दिशा इज वेरी गुड. So right now Venus Disa is very much supporting for the meeting. Venus Disa is very much supporting for the meeting. So now what Rahu is supporting? अभी देखिए Rahu is the buddhi. Rahu is activating from the third house and fourth house, and Rahu is very much activating the third house and ninth house. So what does this third house and ninth house means? Third house and ninth house is for the communication house actually. So during this Rahu ka buddhi, communication will happen in a very smooth manner. See, Dasa is indicating the meeting and Buddhi is indicating the communication. Communication मतलब क्या होता है सर? Understanding बोल सकते हैं ना. Whatever he is telling, customer will understand. Whatever customer is saying, he will understand. And also, third house and 11th house is regarding the documentation and all those things. Third house and ninth house, we call it as a documentation house. So there will not be any more problem in the documentation actually. Means the documentation will be very clear. That is what the buddhi is indicating. Then उसके बाद Mercury का अंतर चल रहा है. Mercury now creating the problem. You see है, Mercury is coming as the 11th house का sublord, as well as Mercury is coming as the antar. So now Mercury is creating what problem it is creating? Mercury is not allowing the documentation to happen on the same day, means on the same meeting actually. So this is the prediction what I gave. So he is very much happy. So he said that 100% you are correct sir. Now I am going to meet the customer today. Okay. तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि आप मीट कीजिए सर, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए. ठीक है, वो सब मान लिया. तो फिर क्या चला कि मेरा दोस्त कस्टमर को मीट किया. उनका मीटिंग सफल हुआ, उनका मीटिंग बहुत सफल हुआ. उसके बाद क्या हुआ कि उनका बातचीत भी बहुत अच्छा था. मतलब वॉट एवर ही सेड कस्टमर अग्रीड, एंड वॉट एवर कस्टमर सेड ही ऑल्सो अग्रीड. मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत अच्छा चल गया. नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, बिकॉज ही इज डीलिंग विद द रियल एस्टेट इन द सेंस प्लॉट, मतलब प्लॉट बेचना और उस प्लॉट में बिल्डिंग बनाना, ये सब डील करता है ये मेरा दोस्त एक्चुअली. So when coming to the documentation part, what customer said is that sir, we need to first see your previous work. We need to first see how you did your previous work. So depending on that, we will give our document to you. So this is what the planet is indicating very clearly, sir. In our KP astrology, in this sublord method, everything is very clear and it will go as per the planet wish only, sir. So now it is very clear that customer ने क्या बताया, सर मैं आज आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा. ही इज वेरी क्लियर, मैं आपको आज डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा, मैं आपका प्रीवियस वर्क देखूंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन दूंगा. दैट इज व्हाट कस्टमर सेड. ओके, एंड दैट इज व्हाट आई आल्सो सेड.
That is what I also said. How I said, depending on the planet behavior and depending on the bhava actually. So our prediction here went very good actually. Our prediction here went very good, and it was the exactly what I said. It happened the same way exactly what I said actually. तो फिर उसके बाद मतलब एक हफ्ता मतलब के बाद कस्टमर ने इनका साइट वगैरह सब विजिट किया, अभी डॉक्यूमेंट देने का बात चल रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड सर एक्चुअली. So this is how we need to analyze a chart, sir, actually. Okay, depending on the question, what is the exact question, what is the expectation, and how it will happen, how it will work, what is the dasha, what is the buddhi, what 11th house is indicating, what lagna is indicating. All these things we need to analyze. What is the planet, what is the nature of the planet, and how it is very well, interacting with us. See, definitely planet will interact with us, sir, actually. If you are, if you involve yourself in astrology, planets and this whole prapancha will, start talk to you actually. They will keep on communicating some messages to you. The thing is that you should be in a very good position to absorb that communication, what planet is trying to communicate to you. So when we compare the other method, this our kp means sublord theory is very much clear, and we can tell the prediction without any confusion, sir. ठीक है. अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आपका हॉरोस्कोप मेरे साथ डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा, मुझे पिंग कीजिए, हम जरूर बात करेंगे. थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट.